सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो निकल कर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। ब्रेंट क्रूड ने सभी रिकॉर्ड स्तर पार कर लिए हैं और करीब 14 साल की ऊंचाई पर ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। भाव $130 के करीब आ चुका है। इसके अलावा WTI क्रूड में भी हम देखेंगे तो वहां पर भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 10% का उछाल करीब वहां पर भी देखा जा रहा है और करीब $125 प्रति बैरल के आसपास WTI क्रूड भी कारोबार कर रहा है, उसके पार निकल चुका है। रूस के क्रूड पर पश्चिमी देशों की ओर से जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसकी आशंका अब बढ़ती जा रही है और इसी के चलते हम देख रहे हैं ये जो उछाल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा JP मॉर्गन की भी जो रिपोर्ट आई थी उनका भी यही कहना था कि साल के अंत तक $185 प्रति बैरल के लेवल्स भी कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और उसी का असर हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत हो रही है एशियाई बाजारों की वो भी वहां पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। कमजोर शुरुआत है। SGX निफ्टी देखिए इस वक्त करीब 2.5% नीचे खुला है। हैंग सेंग के बाजार भी देखिए करीब 3% की कमजोरी के साथ खुले और एशियाई बाजारों में इस वक्त भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड में पिछले काफी दिनों से एक गिरावट पिछले काफी समय से बढ़त देखी जा रही है और पिछले 5 दिनों में ही ब्रेंट क्रूड में एक भारी बढ़त हम देख रहे हैं, देखने को मिल रही है। आगे हम कुछ एक्सपर्ट को भी हम शामिल करेंगे और इस वक्त हमारे साथ क्रूड में जो रिकॉर्ड तेजी हो रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए क्रूड एक्सपर्ट मिसविन महेश। मिसविन, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमें समय देने के लिए। ये जो तेजी दिख रही है इसका ये कितना बड़ा असर आप ग्लोबली देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म की बात करें क्योंकि टेंशन तो अभी कम नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म में और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड में? Yeah, so in the short term, I see Brent crude going much higher. And the reason for it is very simple, right? They're losing another 4 million barrels per day of oil from Russia. The market today is pricing in what is the price that is needed to cut demand off. And it is not pricing in what is the price that is needed to bring new supply on, because there's no new supply that can be brought online at such short notice. So to answer your question, in the very short term, even if it's for a brief period, oil can continue going higher. And one thing we need to remember is this $140 a barrel that we're seeing today is not same as the 2008 period where we saw oil at $140 a barrel, because the value of the US dollar has also depreciated because of the monetary easing that central banks have done. So in real terms, currency adjusted, oil still has much more to go to look at this supply shock in context. We're looking at 4 million barrels per day that's gone from Russia. Even more if you think about the issues oil traders are having today in procuring Russian oil. That said, certain countries can still import Russian oil at steep discounts, but that's obviously very challenging for most consumers. So in the very short term, I do see oil going above $150 a barrel, but I do not see that as a sustainable price. It is a price that will tip most economies into a recession. That is how this market is solving itself, sadly. We are seeing a handful of OPEC members have available spare production capacity. In this scenario, can non-OPEC members can do something, can jump into the supply gap? What is your view on that? Yeah, so at the moment, OPEC's spare capacity, on paper at least, is roughly around 3.5 million barrels per day. So if you think about how much we are losing, it's around 4.5 million barrels per day, and they have 3.5. The problem is, it's on paper that they have this spare capacity. Saudi Arabia has never produced at 12.5, 13 million barrels per day. People aren't sure whether they can even do it. To look at non-OPEC, they're all producing maximum levels, so there's not a lot of spare capacity there. The spare capacity is there today with UAE, Saudi Arabia, a little bit with Kuwait, some of those GCC member countries. But as we've seen in the OPEC meeting just a few days ago, they don't see a requirement yet to bring that spare capacity online. And that's a political decision as well, as much as
it's a technical issue, because politically, UAE is also, at the UN, they didn't vote against Russia and things like that, right? So they do know that a lot of this scarcity has been created because of the sanctions. So they don't want to be seen as, trying to overcome that, even though they, politically their alignments are very different from what the West is doing to Russia. So there's that element there as well. The holders of spare capacity don't believe politically that they should be doing or bringing online that extra capacity. All right. Thank you so much, Miswin, for giving us time and sharing your view on crude prices. Thank you so much for that. तो ये हमारे साथ जुड़े थे मिसविन महेश, हमारे साथ जुड़े थे, जिनकी कच्चे तेल पर बात करते हुए आने वाले समय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिखा रहा है यहाँ पर और ज़्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया शुरुआत में ही कि JP मॉर्गन का जो लक्ष्य है वो $185 प्रति बैरल का लक्ष्य वो देख रहे हैं कच्चे तेल में इस वक्त। और